Dear students, I would like to demonstrate to you how we can determine the expected value of the ratio of two continuous random variables. And let me take an example to explain this to you. Suppose that x1 and x2 are continuous random variables and they have the PDF defined as follows. F of x1, x2 is equal to 8x1, x2 such that 0 is less than x1 and x1 is less than x2 and x2 is less than 1. ये आपने देखा कि इसकी जो सपोर्ट है, जो डोमेन है, that is very interesting. And now that we have this, suppose that the random variable y is defined as y is equal to x1 over x2. Yani, y is defining the ratio of the two random variables. And we are interested in finding the expected value of y. क्योंकि हमारा इस वक्त मौजू यही है ना, how to find the expected value of the ratio of two continuous random variables. All right, let us see how we can proceed. If we start by definition, we should then find the distribution of y and determine its expectation. अगर हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है तो फिर उसकी रैंडम वेरिएबल है ना, तो हर रैंडम वेरिएबल की एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता लग जाए then we have no problem, a random variable along with its distribution, then we have no problem in finding the expected value of that particular random variable. So how do we do this one? कैसे चलेंगे? Let us consider the CDF of y. इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि y जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है उसकी वैल्यू. Students, the value of y will go from 0 to 1, meaning that we will be able to write 0 is less than y and y is less than 1. Now, why is this? ज़रा गौर से देखें कि हमने y जब डिफाइन किया तो हमने कहा कि इट इज़ x1 ओवर x2. हमारा जो ओरिजिनल जॉइंट PDF है उसकी डोमेन किस तरह डिफाइंड है? 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन 1. अब ये x1 लेस देन x2 जो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आप न्यूमरेटर में x1 जो रख रहे हैं, so that is a smaller number than what you have in the denominator. तो अगर ऊपर स्मॉलर नंबर हो, नीचे बड़ा नंबर हो, तो जाहिर है कि वो जो रेशो है that will be a proper fraction. It will be somewhere between 0 and 1. तो ये तो हो गई पहली बात कि y goes from 0 to 1. उसके बाद let us try to consider the CDF of y, the cumulative distribution function of y. So we can write capital F of the random variable y at the point small y, which is the same as the probability that the random variable y is less than or equal to the value small y. This is also equal to the probability that x1 is less than or equal to small y multiplied by x2. ये मैंने अब जो कहा इसमें कंफ्यूजन की एक्चुअली कोई बात नहीं है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. अभी जो पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल y लेस देन और इक्वल टू स्मॉल y, तो वहाँ अगर आप कैपिटल y की जगह पे x1 ओवर x2 लिखें और फिर वो जो x2 नीचे जो है, इफ़ यू टेक इट टू द अदर साइड, व्हाट विल यू गेट? You will get exactly what I just said, that that particular probability is equal to the probability that the variable capital X1 is less than or equal to y multiplied by x2. अब हम ये probability इंटीग्रल के फॉर्म में कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं,
डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं. So let us proceed. We will write integral from 0 to 1 with reference to the variable x2. क्योंकि अगर आप ओरिजिनल पीडीएफ को देखें, जॉइंट पीडीएफ को, तो आपको पता है ना कि 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन 1. तो वो जो एक्सट्रीम है वो तो 0 to 1 ही है ना जी. सो लेट्स डू दैट. वी अप्लाई दैट एंड वी राइट इट. 0 to 1 हमने पहला इंटीग्रल लिखा विद रिस्पेक्ट टू x2. और अब जो सेकंड इंटीग्रल हमें लिखना है उसके लिए वी शुड राइट 0 to yx2. अभी अभी हम कह रहे थे ना कि अब हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग लेस देन और इक्वल टू yx2. तो ये जो सेकंड इंटीग्रल है इट इज विद रेफरेंस टू x1. सो देयरफॉर वी विल राइट 0 to yx2. और उसके बाद यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द जॉइंट पीडीएफ व्हिच इज 8x1 x2. ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं. ये जो अंदर है उसको पहले सॉल्व कीजिए और बाद में जो बाहर वाला इंटीग्रल है उसको बाद में सॉल्व कर लीजिए. सो लेट मी गिव यू 1 or 2 स्टेप्स. अंदर वाला जो है 8x1 x2 उसको अब हम अगर x1 के हिसाब से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो जाहिर है कि 8x2 विल एक्ट एज अ कांस्टेंट. और x1 जो है उसका इंटीग्रल क्या होगा? x1 स्क्वायर ओवर 2. और उसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे 0 to yx2. और फिर जैसा कि होता है अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सो व्हाट विल वी गेट? x1 स्क्वायर ओवर 2 है तो अब हम वो अपर लिमिट लगाने लगे हैं yx2. सो वी विल हैव y स्क्वायर x2 स्क्वायर ओवर 2 minus the lower limit which is 0. So it will become 0 square over 2 or 0 over 2 or 0. तो ये अब आपके पास जो चीज़ आ गई, 0 भी आप जाहिर है कि रब कर देंगे. अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए एंड व्हाट यू गेट? अब एक ही इंटीग्रल रह गया है. इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 और उसके साथ जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो क्या है? 4y स्क्वायर x2 क्यूब. अब इस वाले को x2 के हिसाब से इंटीग्रेट करना है जिसको आप खुद ही कर लें याद रखते हुए कि y and 4y square will act as a constant. तो अब finally what is the final result? Capital F of the random variable y at the point small y has come out to be equal to y square. ये जो हमारे पास CDF आ गया है my dear students, इसका derivative ले लें and that gives you small f of y यानी the PDF of y. So y square है तो आप जब derivative लेंगे तो क्या आ जाएगा? Obviously it will be 2y. So that is it. Small f of the random variable y at the point small y is equal to 2y, where y is going from 0 to 1. 0 less than y less than 1. If you've got it, as I said earlier, now you have no problem. You can find the expected value of y by writing the integral from 0 to 1 y into 2y dy. यानी वो जो बुनियादी फॉर्मूला है वही आप अप्लाई कर दीजिए, solve it, and what you get expected value of y is equal to 2 by 3. So this is the answer for this particular problem, and this is a demonstration of how you can deal with it. By the way, this is one way of dealing with it. There can be another way also, and that is that you can simply write e of y is equal to e of x1 over x2, और उसके बाद आप उसको ओरिजिनल जो आपका पीडीएफ है, जॉइंट पीडीएफ, उसमें x1 over x2 रख के जिस तरह e of anything होता है, इंटीग्रल of that thing into the PDF, उस तरह करके भी अगर आप सॉल्व करें तो the final answer is 2 by 3.